This is part 6 of our daily MCQ series. In this, we will discuss next 20 questions of Indian polity and constitution. So let's start. First question is, which of the following provisions of the constitution came into force on 26th January 1950? Look, we have two important dates. First is 26th November 1949 and second is 26th January 1950. We adopted our constitution on 26th November 1949 and implemented constitution on 26 जनवरी 1950. अब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 ओनली. और वो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या थे? जो फर्स्ट प्रोविजन है, प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, इसको भी इंप्लीमेंट किया था 1949. सेकंड इज प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, ये भी 26 नवंबर 1949 इंप्लीमेंट कर दिया था. और प्रोविजन रिलेटेड टू ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस ऑल्सो इंप्लीमेंटेड ऑन 1949. फोर्थ स्टेटमेंट है प्रोविजन रिलेटेड टू ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ये इंप्लीमेंट किया गया था और केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया था. सो दिस इज 4 ओनली. जो पहले 3 थे वो 1949 में ही फोर्स में आ चुके थे. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी विच इज 4 ओनली. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी. First statement is a national emergency proclaimed on any ground carries no financial effect. This is wrong statement. जब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है तो जो स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उसको चेंज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा. Second is the president may suspend the enforcement of certain fundamental rights, but the fundamental rights themselves cannot be suspended by him. This is also correct, as national emergency came into being. Fundamental rights given under Article 19 automatically suspended. Third is, when the national emergency is in force, the Council of Ministers are dismissed as administration has to function as a unitary system. This is also wrong statement. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसको डिसमिस नहीं किया जाता, ऑल्दो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फंक्शन करता है एज अ यूनिटरी सिस्टम. सो हियर हमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट. सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज D. Next is, which of the following political parties are given exemption from paying income taxes under the law? Here the correct answer is V. All political parties that are recognized with the Election Commission of India, उन्हें exemption मिलता है for paying the taxes. The condition is they have to file the income tax returns every year. Here we have to match list 1 with list 2. So first is Union of India versus Association for Democratic Reforms 2002, which is declaration of criminal conviction if any by contesting candidates. Lily Thomas versus Union of India, MPs and MLAs would be disqualified automatically and immediately on conviction. People's Union for Civil Liberties versus Union of India, right to negative vote for citizens. Public Interest Foundation versus Union of India, the trial courts to complete the trial of cases pending against sitting MPs and MLAs within 1 year from the framing of charges. So correct
Answer is here C. Next question is, which of the following is not correct? The present strength of UPSC members including the chairman is 7. This statement is correct. अभी जो sanctioned strength है यूपीएससी का that is 10 और currently 7 members है including chairman. The member of any public service commission cannot hold any governmental office after the completion of his tenure. This statement is incorrect. जो मेंबर होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या चेयरमैन होते हैं, ही कैन होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया है जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जो है मेंबर ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन वो होल्ड कर सकते हैं. सो the member and the chairman of the UPSC can become governor of any state. Next statement is, the chairman of any public service commission cannot become chairman of any other public service commission on ceasing to hold office. This statement is also incorrect. देखिए, जो चेयरमैन होते हैं किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो चेयरमैन बन सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के विच इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो मेंबर या चेयरमैन होते हैं एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं दूसरे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के. सो हियर थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2. यहाँ पे हमने बताना था इनकरेक्ट कौन सी है, तो 2 and 3 आर incorrect. Next is the constitutional amendment in case of the land boundary agreement between India and Bangladesh has changed the land boundaries of which of the following states of India? Correct answer for this is A. Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura. Next question. The 101st Constitutional Amendment Act requires that GST on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the states. This is incorrect. जो GST होता है on interstate trade and commerce में वो levied और collect किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा which is central government. Number second is GST on the supplies in the course of interstate trade or commerce shall be divided between the union and the state in the manner provided by the GST Council. This is also correct. It is divided in the manner provided by the Parliament on the recommendation of GST Council. जो मैनर होता है वो प्रोवाइड पार्लियामेंट करती है कि कैसे डिवाइड किया जाना है, इसको जीएसटी काउंसिल पार्लियामेंट को रिकमेंड करती है. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी. कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. द एडवाइस गिवन बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट. The advice given by the Public Service Commission is not binding on the government. First statement is wrong. Second is the commission has sufficient administrative experience. Yes, हमने देखा था जो 1/2 member होते हैं commission के, that must be in the services of central government or state government for 10 years. तो इनके पास जो है वो sufficient administrative experience होता है. Number second is correct. So here D is correct. A is false, but R is correct. Next is, in the light of ongoing budget session of Parliament, which of the following statement are correct? First statement is, the legislature institutional control over finances of the executive is stronger in parliamentary form of government than the presidential form of government. जो लेजिस्लेचर का एक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल होता है ओवर फाइनेंशियल मैटर्स, यहाँ पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में हम देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आते हैं पार्लियामेंट से ही, बट
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अदर देन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, तो जो उन पे कंट्रोल होता है फाइनेंशियल मैटर में वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, the railway budget was separated from general budget for the first time in 1924. Yes, this statement is correct. पहली बार रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट में 1924 में, और 2017 में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया वापस जनरल बजट के साथ। Third statement is the decision to present annual financial statement in the Lok Sabha as per the previously announced schedule despite the death of member was based on precedents. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एक बार मिनिस्टर की और एक बार मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की डेथ हुई है, बट फिर भी ये प्रेसिडेंस फॉलो करता है कि जो पहले डेट डिसाइड की है उस डे पे ही बजट को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। सो हियर वी हैव सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी। नेक्स्ट इज which of the following exclusive situation the president can decide who shall preside over the next sitting of the House of Parliament? First statement is if the office of Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha fall vacant. This is correct. अगर दोनों जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड ऑफिस ऑफ डिप्यूटी स्पीकर, वेकेंट हो जाते हैं, तो उस केस में इट्स द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स हु विल प्रिजाइडेड द नेक्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज साइमल्टेनियस एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नो, इन दिस केस इट्स नॉट द प्रेसिडेंट हु विल डिसाइड। दोनों ही हाउस में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है। ये चेयरपर्सन अप टू 10 मेंबर हो सकते हैं। इन्हें नॉमिनेट किया जाता है बाय चेयरमैन इन द राज्यसभा एंड बाय स्पीकर इन द लोकसभा। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, और इन लोकसभा स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, इन 10 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर प्रिजाइड करता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, resignation of vice president who is the ex officio chairman of Rajya Sabha. In this case, deputy chairman will preside it over the Rajya Sabha. Number fourth is simultaneous absence of speaker and the deputy speaker of Lok Sabha. सेम पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक जो मेंबर होगा वो प्रिजाइड करेगा इन लोकसभा में। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हियर करेक्ट आंसर इज बी, विच इज 1 ओनली। Next question is, consider the following statements regarding jurisdiction of the parliament. Sports, entertainments and amusements is a subject on which state legislature alone are ordinarily permitted to legislate. This is correct. Second statement is prevention of cruelty to animal is a subject on which parliamentary law will prevail over state laws in case of conflict. Look, prevention of cruelty animals, ये सब्जेक्ट है अंडर लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल 7। विच इज कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में एज वी हैव सीन दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लॉज ऑफ पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉज ऑफ स्टेट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो राइट आंसर हियर इज सी, विच इज बोथ 1 and 2. Next is consider the following statements. The Constitution of India recognizes the practice of the speaker elect of the Lok Sabha resigning from the membership of the political party representing which he/she got elected. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज किया गया है जिसे स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, वो अपनी पार्टी से जिससे वो इलेक्ट होके आए होते हैं उससे रिजाइन कर देते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर सेकेंड इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय द हाउस इन केस
The House passes a resolution to that effect supported by a special majority. This statement is incorrect. For the removal of the Speaker, it requires a effective majority. इनको एक 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है, उसके बाद दोनों हाउस में बिल को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाता है, विच इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. Whereas special majority is 2/3 majority of the member present and voting. So ये required नहीं होती है, effective majority required होती है, which is majority of the total membership of the house. और बिल जो है वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए. So here correct answer is A, which is one only. Next is, which of the following ideas, ideologies are associated with right-wing politics? Social order and hierarchy, yes, this is correct. Conservatism, very correct. Third is classical liberalism, yes, this is also correct. So right answer here is D. Next is question number 16. Which of the following symbols are protected under the Prevention of Insult to National Honor Act of 1971? First, National Flag of India, yes, this is protected. Constitution of India, yes. State Emblem of India, no, this is not covered under the Prevention of Insult to National Honor Act 1971. National Anthem, yes, this is also covered. So 1, 2, 4 are correct. Correct answer is B. Next is, consider the following statements regarding the Speaker of Lok Sabha. The Speaker is the ultimate arbiter and interpreter of the constitutional provisions that relate to the function of the House. This is correct. अगर कोई भी प्रोविजन होता है विच इज रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ द हाउस, तो उसमें जो इंटरप्रिटेशन होता है स्पीकर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज फाइनल. Number second is, the speaker's certification of the money bill cannot be challenged before any court of law. This is also correct. जो certification होता है speaker का regarding money bill, this is final. The speaker decides as to when a member shall speak and how long the member shall speak. Number 3 statement, this is also correct. So right answer here is D, which is 1, 2 and 3. Next is, which of the following statements are correct regarding the Constitution of India? It is flexible in nature. Yes, Indian Constitution को living document भी कहा जाता है, which changes with time. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन है अमेंडमेंट का अंडर आर्टिकल 368. Whereas जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अमेरिका, तो उसे चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन है, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. सेकेंड स्टेटमेंट इज, इट इज़ फेडरल इन नेचर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्दो यूनिटरी के भी फीचर है, बट इसको क्वाजी फेडरल इन नेचर कहा जाता है. सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज C, which is both 1 and 2 are correct. Consider the following statements regarding the appropriation bill. It can be introduced only in the Lok Sabha. Yes, appropriation bill is a money bill, so can be introduced in Lok Sabha only. First is correct. It contains all the demands for grant voted upon in the Lok Sabha. This is also correct. Introduced cannot be opposed. No cut motion is allowed after the introduction of appropriation bill. Yes, this is also correct. So all the statement 1, 2, 3 and 4 are correct. Which of the following is the largest committee in the Parliament of India? Members 30 members होते हैं estimate committee में, and all the 30 members are from Lok Sabha. So correct answer is estimate committee.